अस्सलाम viewers and listeners. PSL now के drafts complete out हो चुके हैं. What a exciting experience it was. Not so much of a broadcast, I would say, to pass on my initial remarks, but बहुत अच्छे picks देखने को मिली. Of course, surprise exclusions भी हुई, which we all might dissect it a bit later in the show. We have a extended panel of brilliant fellows alongside me. Uh, Let me formally welcome Zad, first time on our channel. He sports Lahore Qalandars and writes brilliantly on GRC occasionally as well. So, Zad, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू बुलाने के लिए। Thank you so much, Zad, to join, and looking forward to have a wonderful session with you. And I have been joined by Imad, first time again on our channel. He will be covering Peshawar Zalmi side of things, but of course, he pretty much is a good fellow on all things cricket. So, Imad, thank you so much for joining, and hope you are doing as good as myself. You're muted, Imad. Sorry, the mic was muted. Thank you for having me, Ahmed. It's an absolute honor. Perfect. And two faces which you might have seen in previous episodes. First of all, Aram to represent Multan. Hey Ahmed, how are you doing? Yeah, no worries. We're the seasoned individuals, Farhan and Aram, myself. over to you. क्या हाल चाल है? Good and good. Alhamdulillah, I'm doing fine. Hope you're well. All is well on your side as well. It's good to be back once more. Perfect. And and lastly, to represent Islamabad United side of things is Talha. Talha, hope you are doing good. And of course, Farmer, welcome. Thank you. It's good to be back. Yeah, nice to have you back as well. And viewers watching us right now, or in case you will watch us on the rewind, please make sure to get involved in the live chat. And there is a poll running in the live chat as well, which team won PSL 9 draft today? Lahore Qalandars, Multan Sultans, Islamabad United, and because of restrictions of YouTube, there could be only 4 options. So आप comment out कर सकते हैं कि which other team, if not from IU, वैसे PCL or सिर्फ LQ won 4 the draft. options So थे तो please get लाहौर और involved in the मुल्तान को chat, वेरी करने comment. थे. We will share your thoughts live here, and we will discuss with each other as well. Okay, guys, without further ado, instant fire reactions. Aram, आपसे start लेते हैं. Are you satisfied? Are you angry? Rant तो नहीं करने लगे आप? Moving on. Yeah, I think the one phrase or the word that expresses myself right now, I can do the best is by using the word anxious. Now, you can take that into any literal meaning, but I think that is the best thing I could describe right now. Share your thoughts live here. Okay, and of course analyze करेंगे, but what are your instant reactions out of it? Satisfied pretty much? Okay, then Tala आपके तरफ आए. I think so. Mix and match emotions तो नहीं आपके तरफ, if I am guessing it right. No, in terms of Islamabad, I think it was a great draft. Trades तो पहले ही बहुत अच्छे थे. We picked up
we needed a bowler. मैंने expect किया था कि Oh, पहले okay. round में Okay. platinum में ही bowler ले लेंगे, लेकिन they picked Jordan Cox. Great form in leagues in the past year. Lahore Qalandars might have been the expected destination for him. शायद इसलिए ले लिया था कि लाहौर में ना जाए, और बॉलर चाहिए था प्लेटिनम और या डायमंड में, तो डायमंड में टिमाल मिल्स को ले लिया. So that gives you the hint कि न्यू बॉल बॉलर नहीं सर्च कर रहे थे पहले राउंड्स में. We will open with Naseem and Imad or Rahim Ashraf, or death bowler Timal Mills हैं, so we will cover Yeah. that Okay. overs Of with course, Naseem. we will dissect it bit by bit. Imad, अगर हम पीजी के स्क्वाड को देखें, they needed a reshuffle, you would say. And how would you sum up if you were in PG camp right now? Would you be satisfied? Would you be happy, or like still nervous about it? Yeah, so I have to talk about PZ, right? Peshawar Zalmi, I didn't hear Yeah, the yeah, team name, sorry. yeah, Peshawar Zalmi, right? yeah, Yeah. So yeah, right, obviously, yeah. they went in a draft with they went in a draft with all the batting they retained, obviously, and it made sense because the batting had sort of made them finish at number 3 in the last season, and so they had to do all the work around bowling, and I think I'm a bit disappointed in terms of that because they didn't really cover all the bases in bowling, but still, generally, with Peshawar, obviously, all these years you've had some low expectations in the draft, which was not the case earlier in the earlier seasons. But so yeah, I am satisfied, but I still have some things to point out. Yeah, nice assessment of things. Nice assessment of things. I do echo your thoughts around Peshawar Salmi. Okay, guys, आप कैटेगरी बाय कैटेगरी ब्रेक डाउन करते हैं. तला, इस्लामाबाद यूनाइटेड से स्टार्ट करते हैं. एंड ऑफ कोर्स ऐसे देखा जाए तो क्वाइटा ग्लैडिएटर्स की बनती थी बारी, बट लाइक वी डोंट हैव एनी सच रिप्रेजेंटेशन. Let's start with Islamabad United. Whole that discussion would be के picks हमारी आई थी राउंड नंबर 2 में, प्लेटिनम के राउंड नंबर 2 में. Of course, all other teams have picked out players, but we went with a wild card, and I think that was second most surprising factor for me in PSL, that we picked Cox, England wicket keeper batter. Mike Hassan के आने से मुझे पता था कि कुछ अनटेरिट हो जाएंगे, but पिक्स देखे हम प्लेटिनम कैटेगरी वाली, तो how would you rate them out? जी, definitely surprise. As I mentioned before, massive surprise for me क्योंकि bowling में strength चाहिए थी, so I thought पहले ही 8वीं पिक है प्लेटिनम में तो बॉलर ले लेंगे, but they went the other way. Obviously they want to play Yeah. top three overseas, so Cox will slot in at 3. लेकिन अच्छा ही हुआ क्योंकि मिल्स भी is a good death bowler. He's been in good form recently, and he can crank it up, and he also has a killer slower ball, is very good at the death. So he covers that, he ticks that box too. Okay. Yeah. And Aram, आपके तरफ आते हैं. Please rate out your platinum player picks, and did they make sense for you? And platinum players को rate करना out of 10, how would you rate them out? They went with David Willey, which was pretty unsurprising for me rather than for the rest of our Twitter audience or the people that used to comment. People were expecting Multan to go for Kyle Mayers, but I specifically told this in our last show as well. They'll adopt to one of the two different strategies, whether to go for a Yeah. specialist bowler or to go for an opening batter, and they opted for for the first one, where they go for an opening bowler who could also give them a few overs at the death, as well as a person who could
go on to hit things at the end of the innings. So I think overall it was a good pick. Uh, People are resenting towards it because of the fact that they expected something completely opposite to what Multan went with. But I think overall, with the team combination, it is a pretty decent pick. A solid 9 out of 10 for me. जैद आपके तरफ आते हैं लाहौर कलंदर्स पे बात करते हैं ऑफ कोर्स टू सक्सेसिव डिफेंडिंग चैंपियंस platinum round को cover पिछले साल भी I think ऐसे किया था फखर जमान was released to the draft and then got picked up then in second round you picked Rasif van der Dussen तो इन दो पिक्स को समराइज करें how did they make sense for you were you concerned कि आपके दोनों पिक्स अप टॉप दो और एक लाइक वन डाउन या सेकंड डाउन सो जो वन इंडिकेशन के बेटर है वे जाना चाह रहे हो सो या सम अप योर थॉट्स अराउंड फर्स्ट टू पिक्स इन प्लैटिनम आई थिंक फखर वाला काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था, लेकिन मेरा ख्याल था कि कोई और टीम आरटीएम फोर्स करेगी लाहौर को करने का, लेकिन नहीं किया सरप्राइजिंगली उन्होंने, लेकिन वो जो कि अच्छी चीज़ थी लाहौर के लिए। खैर दूसरी वेंडरडसन, आई थिंक वेंडरडसन से बेहतर प्लेयर, डिफरेंट तरह का प्लेयर पिक होता था, मे बी अ स्पिनर, क्योंकि मिडिल ओवर्स मुझे लग रहे हैं थोड़े अभी भी कि सिकंदर रजा की बॉलिंग या फरीदून, जो कि मेरा नहीं ख्याल इतना कोई लाइक परफॉर्म किया है कहीं बिग बैश या डोमेस्टिक में, तो आई थिंक स्पिनर में भी एक बेहतर ऑप्शन होती, कोई लियम डॉसन टाइप में भी ले लेते, लेकिन आई थिंक स्टिल अच्छी पिक है वेंडरडसन। टॉप 4 में भी फिट हो जाए कि फ़खर जमान, साहिबजादा फरहान, अब्दुल्ला शफीक एंड वेंडरडसन, तो आई थिंक अच्छी पिक है। या नाइस टू हैव योर थॉट्स इमाद पेशावर जलमे पे बात करें around that timeline of PSL as well. So, do you think it is a risky move or like je bante थे? They had no other choice but to go for Noor Ahmed. Yeah, so about that, I was thinking about the clash they're having with the Afghanistan series, but last season we saw that Peshawar was sort of facing a lot of problems in the spin department, and Usman Kader wasn't doing that much with them. And obviously, Noor Ahmed is the kind of player who fits the Peshawar fits the requirement of the Peshawar Zalmi left-arm spinner. And as Zainab mentioned the draft as well, that he really troubled the Pakistan batsmen as well. Regarding the series, they have picked Mehran Mumtaz, and Hassan Chima was also mentioning that he can be sort of a cover up for him while Noor Ahmed is gone. So I think because they needed a spinner, the need was very dire, and so I think it's a good pick. Yeah. I think Ahmed has crashed out. I can't see his camera anymore. Can anyone of you see him? नहीं, आई थिंक कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो उसको। Okay.
Uh, I'll try to message him. I guess you can just keep talking about Peshawar's picks. You can talk about the diamond category, Peshawar's picks. Right. So I'll just move on to Diamond then. So obviously there was an expectation that after what Azmatullah Omarzai did in the last season and how he did for Afghanistan in the World Cup, I thought that he would be the one who Shah was going to pick, especially when they had sort of Hasibullah at number 5 and Awal at number 6. So I didn't think that they needed Asif that much, and but I think it was Babar's special request, as Muhammad Akram mentioned in the draft, that Asif Ali was sort of brought into the 11. And I think it's a refreshing move, I guess, because it'll be a fresh start for him in a new franchise after he had a bit of a troubling years in Islamabad United. And yeah, and other two spots were obviously retained: Saim Ayub, Tom Korak, Admiral. I think those were some good retentions. And yeah, I guess we can move to some other team now, damn it. Yeah, I'll continue with Islamabad, if that's fine with you guys. We got Timal Mills, as I mentioned before, in Diamond. As I said, not a new ball bowler, he's not a swing bowler at the start, but he has pace and variations for middle overs and depth. So what that means for a bowling combination is Naseem, assuming he's fit, takes a new ball with either Imad Wasim or Fahim Ashraf. So Timal Mills middle and depth, and Naseem again comes back at the depth, with Shadab and Imad finishing out the middle. So it was a smart pick. He's not in very bad form either. He can work as an overseas pick. And yeah, it adds up a bit of variation with the left arm angle as well. Ahmed is back. Okay. Sorry, sorry to all of listeners and sorry to all of you. My internet was like nowhere near. Anyway, so Tala, platinum round wind up care, right? We're talking about the diamond right now. There's some echo, I think, from your guys. It should be gone now. It should be gone now. Okay. Coming So to me and Imad just talked about the diamond categories of our teams. Zaid and Aram are left. okay, cool enough, cool enough. So kind of you. Okay. Acha, there was a pick in थोड़ा कराची पे नजर डालते हैं. I was looking forward towards them. They went with, I would say, if I'm not wrong, Mohammad Nawaz. It was kind of ironic moment for me कि पिछले 2 साल वो ट्रॉली करते रहे उन्हें उनके पीएस उनके जो भी मीडिया फैन बेस है whatever apart from few good people but now they had to pick with them and then they in the second round quite a gladiators को cover करते हुए Mohammad Amir, I was not satisfied with them. But anyway, we are digressing a bit because we have to honor the panelists on the show. Zad, please round up your diamond picks. Still no wicket keeper because ये तो आखिर pick तक जाता जाएगा. So Naf might have got a bit notch up or two for you. But anyway, cover your diamond picks. आई थिंक फरहान वैसे भी विकेट कीपिंग कर लेता है थोड़ी बहुत, तो ही कैन मैनेज. या उसके अलावा शाय होप है सप्लीमेंट्री में तो कीपिंग हो जाएगी. कीपिंग लास्ट टाइम भी हमने ऐसे किया था, एक मैचिंग में एक सप्लीमेंट्री में ले लिया था, काफ़ी था. तो आई थिंक शायद तो फरहान वैसे एक अच्छी चॉइस थी कि टॉप रन स्कोरर था नेशनल T20 का, और मैं हसन चुमा को भी सुन रहा था कि उसने स्ट्राइक रेट काफ़ी इम्प्रूव किया था अपना लास्ट सीजन से. रन वो लाइक काफ़ी देर से कर रहे मैचिंग में, बट उसका
स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं होता था, जो कि अब काफ़ी बेहतर हो गया था। तो आई थिंक ये एक अच्छी इम्प्रूवमेंट है, और लाहौर का जो टॉप ऑर्डर है उसको लाइक और बेहतर करती है। और सिंस ताहिर बेग अभी इमर्जिंग में नहीं था क्योंकि वो एशियन गेम्स खेला था, तो आई थिंक ओपनिंग में जो ताहिर बेग को नहीं लाइक कंपल्शन नहीं थी खिलाने की, तो आई थिंक ओपनिंग बेहतर हो गई है साहिब फरहान के आने से काफ़ी। या मुझे भी सबसे अच्छी पिक इस राउंड में लाइक अपार्ट फ्रॉम लाइक वन ऑफ द बेस्ट पिक्स आई वुड से आई वुड रियली रूटिंग कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वापस ले साहिबजादा फरहान को, बट आई थिंक सो हमारा टॉप ऑर्डर स्टैक होता जा रहा था बाय दैट मोमेंट। अरम आई थिंक सो आप रह गए हो टू राउंड अप द डायमंड कैटेगरी, प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। So we picked David Malan. Again, not a very surprising pick. We had to go for the top three and had to be foreign picks. It was compulsory. So I think considering all factors, it was a pretty good pick. Someone who could provide that left hand right hand combination up top, especially once you're replacing someone like Shan Masood. He plays a similar type of a role, could play a little more aggressively as well, and could carry throughout the inning. So you potentially have two anchors, one of them, in this case Malan, who could play at a much faster rate in comparison to someone like Rizwan, who could carry out throughout the innings. So I think it was a pretty decent pick considering the overall combination. राइट, पेशावर जरबी ने आसिफ अली को पिक किया था बिकॉज आई मिस्ड आउट थॉट फ्रॉम यू गाइस। इमाद, कैन यू प्लीज जस्ट रिवाइंड इट क्विकली? आई लव दैट, आई नो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से पिछले 2 सीजन अच्छे नहीं गए, बट हाउ डू यू फील हिम अराउंड योर लाइक फिनिशर लाइक अराउंड नंबर 6 नंबर 5 पे? प्लीज रिवाइंड योर थॉट्स अराउंड आसिफ अली पर्टिकुलरली। Yeah, sure, Emil. What I said was that I was expecting Azmatullah Omarzai to be sort of there because he had some excellent performances last season and in the World Cup. And the pick of Asif Ali was obviously done on the request of Babar Azam. I think it's a good pick, especially they have such an explosive lineup and Asif Ali can sort of come in and finish things up. But what I'm concerned about is that it sort of pushes Hasibul out of the 11 because you're not going to play him at number 7. So that is one part of it, but otherwise it's a very good pick. जा और कराची किंग्स ने इसमें टिम साइफर्ट को लिया था। दैट वाज एन इंटरेस्टिंग पिक, और इससे पिछली वाली पिक उनकी थी आई थिंक सो डैनियल सैम्स। और हम बात कर रहे थे कि वेदर मुल्तान सुल्तान शुड बी पिकिंग हिम आउट, और अब बाकी सारी फ्रेंचाइजीज पे ले रही थी। सो ये दो क्विक टर्न अराउंड में उन्होंने अच्छी पिक्स दी थी। सो guys, at that moment, were you surprised? Were you get it? Let's have debate on each other's squad. If any one of you want to question each other's squad at that point, किसी से वो हार्श फीलिंग तो नहीं थी कि यार इन्होंने ये वाला प्लेयर हमारा क्यों ले लिया, या we should move moving to the next category? एक सवाल मेरा है लाहौर के बारे में कि ओपनर्स तो आई गेस फ़खर और अब्दुल्ला शफीक ही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टॉप ऑर्डर प्लेयर उन्होंने पिक कर लिया। रेसिफ एंड हुसैन इज 3 एट मोस्ट 4 प्लेयर है। शे होप जो मेन कीपर है, सेम सिचुएशन, लाइक 4 से नीचे तो खिला ही नहीं सकते। तो ज़्यादा टॉप ऑर्डर बैटर्स स्टैक नहीं हो गए ऊपर टॉप 5 पोजीशंस में लाहौर के। Just to add, लास्ट ईयर भी मिर्जा ताहिर बेग को कहाँ अकोमोडेट करेंगे लाहौर वाले नहीं इस होगा, केस में? बेंच पे So होगा। you won't be having him in the team. सही है। नहीं, ताहिर नहीं खेलने लगा। वही मैंने पहले भी कहा था ना कि लास्ट ईयर भी अब्दुल्ला शफीक ने 3 पे खिलाया था, फ़खर और ताहिर बेग ओपन कर रहे थे, तो इस साल भी यही करेंगे, बस ताहिर बेग की जगह साहिबजादा फरहान आ जाएगा और वैसे वेंडेड हसन जो है वो 4 पे आ जाएगा आई थिंक। तो शे होप को बाकी 5 5 पे पे थोड़ा है कि फ्यूचर में भी इसकी डैन लॉरेंस या कोई और इतना लाइक कमरान गुलाम में भी, लेकिन वो इतना खास अच्छा मुझे लगा नहीं नंबर 5 पे खेलने के लिए। बाकी आई मतलब थिंक डैन लॉरेंस Zed, just मतलब a फरहान question, से Zed. कीपिंग करवानी है। I know we're like really bombarding. Can I go?
हाँ हाँ, Yeah, sure. मैं लाहौर का अंदर फैन हूँ, पहले Yeah, 5 yeah, सीजन मेरे साथ yeah, वो yeah. होता So I रहता know था, we're वोटिंग really करते थे। bombarding questions on you, said. We're really bombarding questions to you, said. But the thing is that how are you gonna play? Why didn't you pick Sam? Why didn't you guys pick Sam Billings in place of Rassi Vanderson? Because he did provide a lot of utility to you guys in the last season, and he's gonna play at number 4, and that Rassi Vanderson is not the best position at number 4, right? So why not Sam Billings or Cox? आई Cox, थिंक maybe Cox was picked. Yeah. So what about Sam Billings? कॉक्स पे हो गया हुआ था। आई थिंक वेंडरसन एक बेहतर लाइक T20 बैट्समैन इन माय ओपिनियन। सैम बिलिंग्स जरा ऑन एंड ऑफ था लास्ट सीजन। आई थिंक यूटिलिटी था लेकिन सही था, लाइक नॉट लेकिन कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था इतना। बाकी आई थिंक इंडिया इंग्लैंड को सीरीज का क्लैश आया तो भी सैम बिलिंग्स वहाँ नहीं जा रहा। हाँ, काफ़ी इंग्लैंड के प्लेयर इसलिए नहीं सेलेक्ट हुए, जैसे एटकिंसन भी नहीं हुआ। आई थिंक क्लैश है इनका वो Look, दोनों की। England Bangladesh had a series last season, and Sam Billings chose to play in the PSL, and he's probably going to warm the bench for the England, I guess. So I guess he would have picked Pakistan Super League again because he doesn't have a contract with England right now. Just to point out. हाँ, उनका आई डोंट कॉन्टैक्ट नहीं नो है। रियली। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसका। Yeah. Okay. So first two categories I would say are done. Gold category में Multan Sultans I think so kick started the round. Officially पेशावर जर्मी ने kick start किया था, but Multan Sultans के back to back दो picks थी in the form of Reza Hendricks and Reece Topley. But these two are really solid picks. I mean, one of the most like bowling में देखें और batting में देखें most impactful players around. Reece Topley of course वर्ल्ड कप में मिस आउट हो गया, बट रिजा हेंड्रिक्स ने क्लास शो की। मोस्ट एस्थेटिक इनिंग कौन सा मैच था, सेकंड मैच था या थर्ड मैच था, मोस्ट एस्थेटिक इनिंग्स खेले थे उस मैच में। कंटेंट डिकॉक ने भी सेंचुरी बनाई थी, बट हिज नॉट। हाँ, इंग्लैंड वाला मैच था या। सो या अरम आपकी तरफ से आते हैं। बेसिकली मोस्ट सॉलिड पिक्स ऑफ द PSL ड्राफ्ट फॉर यू, राइट? Yes, considering the picks that were made after these, I think these two were the most solid picks. Uh, थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि इनको यूटिलाइज किस तरह करेंगे कंसिडरिंग व्हाट पिक्स दे मेड लेटर ऑन, बट आई थिंक टॉपली इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर कंसिडरिंग द क्वालिटी ऑफ द बॉलर्स दैट वर गिवन टू यू इन द ड्राफ्ट एंड द कैटेगरी दैट ही रजिस्टर्ड इन. I think that he'll help Multan, especially considering in the last seasons the way Multan lacked in the fast bowling department with terms to have an experienced overseas pacer. I think that void will be filled up this time round, considering we have both David Willey later on and Reece Topley coming on. And Hendricks, though, is Hendricks. He plays the way he should. He plays so well, so elegantly that people tend to admire him most of the time. And I think he'll be a good asset to Multan going forward as well. एंड ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, या गोल्ड के दो पिक्स हो गए आई थिंक सो। तैयब ताहिर सिल्वर में थे, राइट? हाँ, Yes. तैयब ताहिर सिल्वर में थे या उन पे आएंगे। अगर गोल्ड पे रहते हुए आई थिंक सो पेशावर जल्मी की एक पिक थी, बिकॉज QG के पिक्स नहीं थे, दे हैड ऑलरेडी दे आर क्वार्टर फील्ड। पेशावर जल्मी वेंट विद नवीन उल हक, इंटरेस्टिंग चॉइस, पेसर फ्रॉम अफगानिस्तान अगेन। अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा इशू रहेगा, बट स्टिल आउट एंड आउट पेसर नहीं थे। जब वो बात कर रहे थे कि वी नीडेड कोई पेसर, आउट एंड आउट पेसर फिर भी नहीं कह सकते, बट really decent option in T20 with his variations, with his cutters. Intelligent bowler too, at times composure वो lack करते हैं अफगानिस्तान के bowlers, you know. But overall a solid pick, I would say. How would you rate that pick, Imad? Yeah, so this was probably a moment when I was expecting a new ball bowler, because this is what Peshawar lacked last season. Azmatullah Omar Zai and some part-time spinner were probably opening the bowling for them in the last season. And so at the time when Madhushaka, Josh Little, Topley obviously got picked, but I think there were some options that could have been taken as a new ball option. Obviously, there are no
taking away from Naveen Huq's ability as a bowler, and he can sort of go with the new ball as well, but not he's not the specialist new ball bowler. So I guess yeah, at this was the moment I wanted a new ball bowler to be picked, but it's fine. And about the availability, they've got Lungi and Gidi in the supplementary category, so Yes. I'm sure they picked him as a replacement. Yep. Okay, to round off, हाँ, gold category तो of course है round up हो जाएगी. Then I mean, जरा इस पे थोड़ी सी वैसे बात करें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की ही पिक थी सिल्वर राउंड को किक ऑफ करने के लिए, and that was South Shakil. Notice like I really like him as a batter, but in T20 eyes to kick off round one. Does it make sense for you? Do you think he gonna flourish in that modern day of cricket? T20 cricket में भी वो adapt कर लेंगे game, or is it a too much of a risky move for them? Aram or Tala, whoever you wanna go first. Yeah. Yeah, so I'd like to add something. Considering the picks that Quetta Gladiators used to make in the previous seasons, you used to have players like, which were very good in their prime, no disrespect towards them, Umar Akmal and Ahmed Shahzad being picked by Quetta Gladiators. So I think it's a good transition to coming to someone like Saud Shakil, who could provide you some sort of utility in the middle order, play spin particularly Okay. well, could rotate the strike well if he's given the chance though. But I think that Quetta is in the transitioning phase, and eventually in a season or two they'll reach to a point where they go towards the modern game as a whole with terms to picking players in the draft rather than going for old washed out players, so called, or people who are not at their prime. So I think that this is pretty interesting for me, because I was surprised they picked Sau Shakil rather than going for Umar Akmal again. Yeah, and Okay. if I can add Any something, argument, guys? you've named his qualities, like playing spin in the middle overs and everything. लेकिन उसका फायदा तो तब उठाएंगे जब उसको पहले खिलाएंगे. तो 4 सीजन बेंच पे रखे, 34 मैच, तो अभी फिर मुझे लगता है रिकॉर्ड सेट करना है इन्होंने कि कितने कंसेक्यूटिव मैच एक प्लेयर को बेंच कर सकते हैं. Yeah. Okay. So If I could we add have something, this was very much expected for me. This was very much but expected what? for me because Nadeem Omar said after Saud Shakil's pick was sort of expected for me because Nadeem Omar, after what he did against Netherlands, it was an excellent innings. He said that he sort of apologizes that the Quetta Gladiators didn't utilize Saud Shakil in that way, and he said that he can open the innings and play at number 3. So what you guys mentioned about him rotating the strike in the middle, I don't see him being in that role because of what Nadeem Omar said. I think he's going to be opening with Roy. Smeed is going to be benched. That is what I feel. लाइक स्मीड को फिर वही लाइक स्मीड का फिर वही साउथ शिकिर वाला हार हो जाएगा. लास्ट ईयर उसको गप्टिल के लिए बिठाया था इन्होंने, इस साल उसको साउथ शिकिर के लिए बिठा देंगे. एंड लाइक उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है बेचारे की पीएसएल में. लाइक कोयटा के आई थिंक उमर बिन यूसुफ भी कोयटा ने पिक किया, तो वो काफी इनका भी लाहौर के अंदर टाइम मसला है कुछ. Yeah. Okay, guys, time to move on. Silver round पे आते हैं, and that is where first our team of the day was used. Zaid आपके पास से दोबारा टर्न लेंगे because it was आप लेना चाह रहे थे सलमान इरशाद, but पेशावर जल्मी said no. Then आपने एक अच्छी पिक ली मोहम्मद इमरान जूनियर, और आपकी पिक्स थी if I am recalling एहसन भट्टी थे एक, and Dan Lawrence, Essen Bhatti, Dan Lawrence, and then Imran Jr. to fill up your silver categories. दो तो मेरे ख्याल आपके पीडीपी से हो गए. So how do you see them slotting your silver player list? आई थिंक पीडीबी के भी जो प्लेयर हैं अच्छे हैं. एहसन भट्टी ने आई थिंक एक मैच खेला था लास्ट ईयर, उसमें लाइक उसने अच्छी ज़्यादा कोई चांस मिला नहीं था, लेकिन उसको एक अच्छी बैटिंग की थी. आई थिंक उसने काफ़ी लाइक एक अच्छी शॉट पे छक्का मारा था, किसी स्पिनर को मुझे नाम नहीं हो याद. बाकी मोहम्मद इमरान जूनियर मुझे लाइक काफ़ी देर से पसंद है. वही बात है कि पेशावर ने हमारा प्लेयर वापस नहीं किया, हमने कहा उनका प्लेयर एक और ले लेंगे, हम मोहम्मद इमरान जूनियर ले लेंगे.
इमरान इरशाद मुझे काफ़ी पसंद था, लेकिन वो लाइक पीडीपी वाला प्लेयर है, वो भी मुझे लाइक काफ़ी पसंद है। मैं लाइक काफ़ी देर से कहता हूँ कि लाहौर के अंदर का ये लेवल है कि जिन प्लेयर को खिला नहीं सकते, बेंच पे बिठा के ज़ाया नहीं करना चाहते, उनको दूसरी टीम को देकर उसका बेस्ट बॉलर बना देते हैं। तो आई थिंक इमरान इरशाद काफ़ी अच्छा बॉलर है। इमरान जूनियर का ये है कि वो मैं देख रहा था ग्रास रूट्स पे कि इमरान जूनियर नेशनल टी20 का बेस्ट डेथ बॉलर था, तो आई थिंक हाँ अच्छा है। लेकिन उसका वही मसला है कि हमारे पास जमान खान, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी पहले ही हैं, तो 3 पेसर्स पहले ही हैं। आई डोंट थिंक कि इसकी जगह इतनी बनेगी रेगुलरली, इसकी भी, जहांदाद खान की भी। तो दोनों लाइक काफ़ी अच्छे पेसर हैं, दोनों लेफ्ट आर्मर हैं। आई थिंक मे बी शाहीन को अगर ये रेस्ट दें कहीं, मे बी इसलिए उस तरह इन्होंने 2 और लेफ्ट आर्मर पिक किए हों, क्योंकि शाहीन टी20 का कैप्टन भी है, तो आई थिंक ये हो सकता है प्लानिंग। बाकी अच्छी पिक्स तो हैं। डैन लॉरेंस काफ़ी एक अच्छा प्लेयर है। आई थिंक इंग्लैंड के स्क्वाड पे फ्रिंज पे है वो काफ़ी देर से, 2 साल से लाइक ऑन एंड ऑफ एक आधा मैच खेला है, लेकिन टी20 लीग में भी खेला है वो, ब्लास्ट और 100 में भी लाइक अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी। लेकिन आई थिंक नंबर 5 के लिए एक बेहतर बैट्समैन पाकिस्तान लाहौर कलंदर को पिक करना चाहिए था इसके लिए। ओके। जे राउंड इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए काफी इंटरेस्टिंग था। सलमान अली आका को हमने पिक किया, फिर हमारे खिलाफ आरटीएम जूसो इन द केस ऑफ उमर बिन यूसुफ, फिर हमने पिक कर लिया कासिम अकरम को। आई एम लाइक रियली पम्प्ड अप टू सी हिम परफॉर्मिंग, होप ही इज गिवन एम्पल चांस। मुबस्सिर खान की तरह जरा हम उसे प्रॉपर चांस अगर वेस्ट ना करें। Few other examples as well. So yeah, Tala, over to you. Please have your thoughts around our silver round. या पहली पिक मैथ्यू फोर्ड की थी, वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर, हाँ, रिसेंटली मेड हिज डेब्यू अगेंस्ट इंग्लैंड। अच्छी परफॉर्मेंस थी। सैंपल साइज काफ़ी छोटा है, लेकिन स्टैट्स काफ़ी अच्छे हैं टी20 के। इतना ज़्यादा क्रिक इन्फो पे देखे, उस पे इट्स हिज राइट आर्म मीडियम, सो आई डोंट नो अबाउट हिज पेस और एवरीथिंग, वेदर इज नहीं, I was watching 135 भी click करता है, yeah. ओके, Yeah. या देन इट्स फाइन। और बाकी पिक थे सलमान अली आगा, कासिम अकरम एंड शहाब खान। शहाब खान लेफ्ट आर्म पेसर, बॉलिंग ऑलराउंडर, गुड परफॉर्मेंस इन नेशनल टी20। तो नेशनल टी20 के परफॉर्मर पे थोड़ा मेरा डाउट है, क्योंकि क्वालिटी काफ़ी डाइल्यूट हुई है इस टूर्नामेंट की। 18 टीमें हैं, मतलब जिधर अहमद शहजाद भी परफॉर्म कर जाए तो फिर सवाल तो उठाना पड़ता है। तो इंटरेस्टिंग टू सी हिम। सुपर 8 राजा कर दिया था अहमद शहजाद के लिए कि पता चल जाए। बस करना ही पड़ता है, इतनी पीआर दूसरी तरफ से आ रही होती है। So it'll be interesting to see the national T20 performance play in the PSL अगर चांस मिले। So I guess he's a backup for Fahim Ashraf in a way. तो आगा एंड कासिम आर इंटरेस्टिंग पिक्स। सलमान अली आगा काफ़ी सीजन से PSL निकली, played for Lahore in 2019 last time I think. तो कासिम अकरम समहाउ रिलीज्ड बाय कराची किंग्स, लेकिन लाइनअप अगर हमारी देखें तो ऑनेस्टली मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि दोनों को इतना चांस मिले। टॉप 3 में वो तीनों ओवरसीज होंगे, हिल्स, मिनरो, कॉक्स, और 4-5 पे शदाब और आजम। तो एक पॉसिबिलिटी यही है कि कासिम अकरम या आगा को 4 पे खिला लें और शदाब आजम एक स्लॉट नीचे चले जाएं, और फिर इमाद और फ़हीम टू राउंड आउट द बैटिंग ऑर्डर। वरना वो मुबस्सिर खान जैसे नंबर 8 पे बेचारे को खिला देते थे, वैसे तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है इन दोनों के साथ। So yeah, it was a good silver round for us. I think Ford is a unknown quality really. I guess backup for Mills. और इन दोनों में से एक को खेलना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि एक्स्ट्रा बैटर हम खिला सकते हैं। So it will be interesting to see if they are given the chance at number 4. Aram, आपके तरफ आते हैं मुल्तान सुल्तान। तैयब ताहिर, you rated him highly in our ARD draft show. So I really know your thoughts around him. Your other picks were Shahnawaz Dahani, and please fill me in with your third pick. It was Muhammad Ali, right? Please fill me in with his like
player profile because, to be honest, I really don't know much about him. Them three as your silver category player. So we had four players in the silver category. We picked Tayyab Tahir, Shanawaz Dahani, Mohammad Ali, and Usman Khan, who is ex-Pakistan and Hmm. now currently a UAE player registered overseas. So Okay. starting with Tayyab, we talked about this in the draft show as well. I feel that he is positioned at the correct place in the batting order. I feel like he'll play that role at number four, provided that he has ample amount of overs remaining to go forth. As far as the rest of the picks are concerned, Dhani, we all know he did well in the final as well, if I'm not mistaken. He's coming back from an injury, and last season pretty off gaya tha uska, but this season we hope that this season he'll do pretty well. उसके अलावा मोहम्मद अली is the pacer that he debuted for Pakistan. I think it was last year, and when we played on those flat pitches against Australia, and we had a lot of people on Twitter pointing it out before the series that this is he's such a great bowler that we need someone of his pace who just runs in and bowls those high paced deliveries with a shorter run up. And we played him on the ugliest of tracks possible that Pakistan could ever produce due to some people. But I think that was pretty unfair with him at that stage. I think that this pick is something relating to providing stability within the bowlers, someone who could maintain a good line and length, also having a decent amount of pace. So I think he'll not get much of a chance to feature in the 11, but I think he's a good backup. But you never know, Abdur Rahman Saab might have something in mind with regards to him, with working with him. And we had Usman Khan. Now, pretty interesting pick. Initially, I was resenting it as well, but I later realized that he could be utilized as a good spin hitter in the middle overs. You could introduce him as a floating batter whenever spin comes on. You could send him in, and he could give you 3 to 4 overs worth of great batting to watch, as well as improving your overall team's run rate. So I think that utility of these players is something that matters, and I think Rizwan is the correct captain to have such sort of side. I think the combination Multan has went with this time round is something that is not easy to manage, and I think someone who's comfortable with having loads of options and all-rounders with him, Rizwan will do pretty well with managing them, and I think that it will go better for them this time round. Yep, I think so. In Pakistan, he is best resource optimizer in terms of being captain. किसी और कैप्टन को ये प्लेयर दे दें तो he won't be able to squeeze out. Good tactician, good man manager. I really rate him highly. Okay, PZ रह गई है, right? If we are not missing them out, yeah, Imad, please cover the silver round. Yeah, so Salman Irshad, obviously, we use the right to match for him. He was sort of the headline pick for the silver category, and I was very disappointed when Peshawar didn't retain him earlier on. And so it's a great decision to bring him back, especially with what he's doing in the T10 right now and what he did in the last 2 seasons for Peshawar Zalmi at that excellent bowler, and he should be there, right? And so we went on to pick Arif Yaqub, Omer Afridi, and Daniel Moolsey. So obviously, I did some digging on Daniel Moolsey, and I found him to be a very talented batter. Okay. Obviously, with such young players, the positions are not that fixed, so they are sort of in and around. So we went with Arif Yaqub and Omer. Arif Yaqub is obviously a talented spinner, and he's done well in domestic cricket. And but the structure of the draft is such that the silver players do tend to sit on the bench and serve as backups. So that will be the role of these guys. But you never know with any injuries or whatnot. We can always have them in the 11th. Mm, Imad, are you done with your thoughts? ओके, इधर मेरी थोड़ी सी रेंट सेशन है, इतनी ज्यादा भी नहीं, बट काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड.
बिकॉज अभी इमर्ज जब जैसे आप बात करते ना कि सिल्वर कैटेगरी ज्यादातर लोकल प्लेयर्स पे आके सिट डाउन हुई, दैट इज रिफ्रेशिंग टू सी, बट इन जेनेरिक बात करो पूरे पीएसएल ड्राफ्ट में एक भी नीदरलैंड्स का प्लेयर पिक नहीं हुआ। I was really surprised because there are really solid players. Uh, स्पिन में चले जाए आर्यन दाते हैं, रिलफ वंडन मर्वे कैम्सक्वीजा, one season or two for any of franchises. Batters में चले जाए लोगन वैन बेक, you know, with his all-rounded skills. So, uh, Aram Arzad, do you have थॉट कि अगर नीदरलैंड में से कोई प्लेयर आपकी टीम ने लेना हो फ्रॉम एमएस और एलक्यू, हु वुड यू हैव ऑप्टेड? और इन जनरल अगर हम ओवरऑल देखें, डिड पीएसएल फ्रेंचाइजेस मेड सेंस के नीदरलैंड के प्लेयर्स की तरफ नहीं गए? हाउ डू यू फेल्ट अराउंड दैट? I think Scott Edwards could have been a good pick for Lahore Qalandars. विकेट कीपर वैसे भी थोड़ा मिसिंग था, और उसके अलावा मिडिल ऑर्डर में लाइक अच्छा बैट्समैन है स्कॉट एडवर्ड्स, खासतौर स्पिन बॉलिंग का। तो आई थिंक जहां हमने लाइक सिल्वर में डैन लॉरेंस पिक किया, वहां में भी स्कॉट एडवर्ड्स हम पिक कर सकते थे, बेहतर चॉइस हो सकती है। यही वो क्या नाम था उसका, तेजान निदामना, आई डोंट नो, तेजा समथिंग जो था, वो भी लाइक अच्छा बैट्समैन लगा मुझे। व्हाट अबाउट यू आराम? I think that Multan की combination में Logan Van Beek could be a person who could have been fitted in perfectly. Who could give, एक तो Netherlands के सारे players out of 11, 10 of them can bat throughout the innings. So you have that betting option with every player you choose from the Netherlands. Bowling में he could give you a solid few overs, and I think Multan really needed a good fast bowling all-rounder who could give you few runs with the bat. They went with David Willey eventually, but we had in mind that they would go for Azmatullah Omarzai, but they didn't. So I really expected one of the Netherlands players to be chosen or drafted by Multan, but they had other plans. So what can we say? And to round off silver round, Aram, I think so इधर थोड़ा आप लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए। I think so हिजाब जायद ने हिंट भी दिया था कि because Karachi Kings picked Arafat Minhas in silver round और आप लोगों ने like RTM नहीं यूज किया, would you have opted for? Are you still frustrated with it? या अभी जैसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, you have recovered that spot? No, I think it is a double-edged sword because दोनों जगह पे जहाँ भी होता है, here he would have been behind Khuzdil Shah, and there also he'll not be the first one to be selected in the playing 11 because Nawaz will be playing. So I think that दोनों जगह पे same issue of face हो रहा था. I think that was partly the reason that Multan let him go as well. Maybe because they wanted him to get an opportunity somewhere else, but उसकी किस्मत ऐसी थी कि वहाँ भी उसके साथ वही होगा। खैर, but I was disappointed that Multan did not use RTM, but they could not have because their silver roster was filled up by that time. So, but they could have picked him earlier on, but these are all ifs and buts. But we wish him all the best because we really want him to succeed. He's a great talent for Pakistan in the future as well. अरम, एक क्वेश्चन है मेरा कि हाँ श्योर खुशदिल की जो फॉर्म है रिसेंट, लाइक कोई इतनी खास अच्छी फॉर्म है नहीं, तो अरफात बेहतर चॉइस नहीं होना था अगर अरफात चूज करते हुए खुशदिल? Yeah, I think मेरा भी यही ओपिनियन था इनिशियली, बट जो मुल्तान की मैनेजमेंट है उनका फेथ खुशदिल शाह में कुछ ज़्यादा ही है. They felt and I heard Heather Bhai talk about it in the previous season as well, कि they felt that Khushdil was not given the enough opportunity to bat in the last 2 seasons, considering that उसकी बारी जब तक आती थी they would have been done with almost 15 to 16 overs. एक आध मैच उसको फिनिश करने को मिला था. He was able to finish one of those. So they feel that they have to redeem themselves by making him the first pick in my opinion. I think ये mindset था उनका for retaining him as well. Okay, so guys, let's have a little bit of breather. Let me interact with audience. I think so. नेपाल से किसी ने ज्वाइन किया? Sorry, I can't comprehend your name, but anyway, thank you for joining. You are predicting Australia for 3-0 in Test series. Of course, we will touch down moving further. South Africa के बारे में आपने कहा 2-0. Thank you for tuning in. Of course, we will be touching down on to
rewind the PSL. I think so. Ritvik ने हमें join किया. He has been to our shows previously as well. So Ritvik, thank you for joining, and viewers please get involved in the live poll as well. जो अभी तक लाहौर कलंदर्स के हक में जा रहा है, 67% of people have gone with PSL draft winner as Lahore Qalandars. Okay, मेरा तो ख्याल है मैं भी वोट emerging. ना करूँ लाहौर के अंदर। नहीं, Nice मैं man, पहले nice man. पहले मैं कह रहा था कि अगर 4 ऑप्शन है सिर्फ, तो आप लाहौर और मुल्तान को बाहर ही कर देंगे, उनका ड्राफ्ट तो उतना अच्छा नहीं होगा। हाँ वैसे लाहौर का Okay, इतना जी. बुरा ड्राफ्ट नहीं था वैसे। Hmm. Okay, टॉप 4 guys, वाला अब ड्राफ्ट आते तो हैं. है। Hmm. Okay, guys. Hassan Tanveer ने भी कमेंट किया. Let's see what his comment says. कल हसन अली खेलना चाहिए था. Okay, we might have few rants over this point. Please stay tuned. Like we are about to go towards Pakistan Test match as well. And thank you for the comment. डॉक्टर ऋत्विक का कमेंट रीड आउट कर लेते हैं. आई थिंक फहीम अशरफ की जगह नहीं बनती है. ऋत्विक प्लीज स्टे ट्यून्ड. वी जस्ट डोंट वांट टू डाइग्रेस ओवर दैट राइट नाउ, बट आई थिंक सो 5 मिनट्स के बाद हम उधर स्विच करेंगे. ओके, इमर्जिंग कैटेगरी पे अगर आए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने स्पॉटलाइट ली. लाइक हुनैन शाह आ गए और कल हमारे साथ एहसन थे. उन्होंने आइडिया फ्लोट किया था कि वी माइट रैप अप ऑल 3 ब्रदर्स. वी डिड सो तला, आई हैव योर से. वी गॉट द नहीं, स्पॉटलाइट. मैं तो वैसे I mean, I'm still not comfortable that कि पूरी हायरार्की बना के रखते. ओके, 2 प्लेयर निकले, दैट इज इनफ. इतना भी नहीं होना चाहिए कि उनके उनकी टीम बनाए. बट एनीवे, दैट इज अनलाइक नो. नहीं, मैं तो वैसे मजाक नहीं कह रहा था कि तीनों भाई ले, लेकिन बाकी ले और कुछ वैसे मैंने रूमर्स वगैरह देखे थे कि शदाब वांट्स टू पिक जहांदाद खान फ्रॉम रावलपिंडी, क्योंकि he can bat a bit left arm angle, but they did go for the 3 brothers. जैसे वो WWE में है ना, ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, शायद वो भी हमारे लिए भी वही रोल प्ले करे. बट beyond like the hype factor and all, you can't deny that Hunain and Ubaid are extremely talented bowlers. शायद हुनैन से ज़्यादा उबैद talented है, raw talent उसमें ज़्यादा नज़र आता है. So combining with Shamil Hussain, I think it's an excellent trio of players who can stay with Islamabad for a lot of season to come. ओके, इमाद पेशावर ज़ल्मी ने एक बहुत अच्छा प्लेयर लिया है, जहाँ पे ब्रॉडकास्ट पे ऑल सॉर्ट ऑफ मैस कर रहे थे. बट मोहम्मद ज़िशान पिक किया अंडर 19 एशिया कप में. अपने फायरवर्क्स सिखा रहे. हिज batting fireworks were equally good as well, I would say. Soja, please cover and rate the emerging picks made by Peshawar Zalmi. Yeah, I think that was expected. Obviously, all these picks like Hunain Shah and Mohammad Zishan and even Obaid Shah, all these picks were sort of expected, and I'm really happy with the emerging category of Peshawar Zalmi as a whole, because they had Asifullah earlier on retained as well. He's a star boy of Peshawar Zalmi, obviously not going to play, but still. And then Mohammad Zishan as someone who can bowl really well, and yeah, and Hassan was also really happy with that pick too, and he hoped that Peshawar is going to nurture him aista to, like, for the next 4 years, because he is a talent to cherish, and I'm extremely happy with that pick. All right. Zaid, आपकी तरफ आते हैं. Please explain for our viewers. There might be few unknown entities. One is Jahandad Khan, and other one being Said Faridun Mahmood. Please expand on their player profile, like whether they are all-rounders, batters, just for our audience, and then please expand your thoughts and ratings for those. आई थिंक जादाद खान अगर किसी नेशनल टी20 देखा है, बल्कि आई थिंक इवन तीनों फॉर्मेट्स को खेला रावलपिंडी रीजन से, एंड काफ़ी लाइक अच्छा बॉलर है. टॉल लेफ्ट आर्म बॉलर है जो कि ज़रा हिट दैट किस्म की बॉलिंग करता है, एंड ही कैन बैट अ बिट एज वेल. उसने एक मैच फिनिश किया था पिंडी के लिए, मुझे याद नहीं किस ओपोनेंट के लिए, लेकिन आई रिमेंबर एक मैच ने फिनिश किया था कोई लाइक 150 प्लस के स्ट्राइक रेट की इनिंग्स पे.
और अच्छे ही लाइक पिक है, जिसने तला कह था कि शादाब खान उसके साथ खेला हुआ है नेशनल T20 में, एंड र्यूमर है कि वो लाइक चाहता था उसको पिक करना भी। तो आई थिंक यही एक टेस्टमेंट है कि कितना टैलेंटेड है जानदार खान। उसके अलावा सैयद फरीदून जो है वो एक पीडीपी प्रोडक्ट है, इसको बिग बैश भेज चुके हैं एक दफ़ा लाहौर के नंबर वाले, लेकिन आई डोंट थिंक इसने कोई ज़्यादा गेम्स खेली थी, एक आधी गेम ही खेली थी इसने। ये लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है या लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, और आई थिंक ये इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैंने कहीं सुना था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कहाँ, लेकिन ये लाहौर कलंदर्स वालों के कहने पर जो है वो लाइक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर बना है। पहले ये लाइक एक फास्ट बॉलर या मीडियम टाइप बॉलर था, तो आकिब जावेद या किसी और लाहौर के अंदर का नाम नहीं याद बंदे का किसने कहा था, लेकिन उन्होंने प्रपोज किया था आइडिया कि लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर ज़रा ज़्यादा अनकॉमन होते हैं, तो वो एक बेहतर चीज़ हो सकती है अगर करना चाहो तो। बाकी आई थिंक ओके क्योंकि फास्ट बॉलर्स वैसे ही 3 हैं लाहौर के पास, और उसके अलावा डेविड वीज़ा भी है, तो आई थिंक जानदार खान तो मुश्किल ही बात है खेलेगा। फरीदून ज़्यादा मैचेस खेलेगा, और आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग कि वो लाइक कितना डेवलप हुआ, क्योंकि आई थिंक 2 साल हो गए हैं सिंस ही वाज सेंट टू बिग बैश लीग। तो आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग कि वो लाइक आई होप उसको 10 मैचेस मिले, क्योंकि राशिद खान प्रॉब्लली नहीं खेलेगा, तो लाइक एक वही स्पिनर है लाहौर के स्क्वाड में। ओके अरम, आपके प्लेयर की तरफ आते हैं, दैट इज यासिर खान। और अगर इन अ वे आप कवर कर सको क्वेटा और कराची में से अगर कोई प्लेयर लेना चाहते हैं, आई थिंक सो क्वेटा से एक प्लेयर है आदिल नाज। आई रियली रेट हिम हाईली, मुझे बहुत अच्छा पेसर लगता है। इनस्टिंक्ट बहुत अच्छी है उसकी। सो या प्लीज हैव योर से ऑन यासिर खान फर्स्ट, या कोई और प्लेयर अगर आप आइडियली लेना चाहते तो हु वुड हैव? या आई थिंक यासिर खान की जब इनिशियल सिलेक्शन हुई, जब ड्राफ्ट किया, तो आई वाज अ बिट स्केप्टिकल कि क्यों किया है अनदर ओपनर, अनदर पर्सन टू बैट हायर अप इन द बैटिंग लाइनअप। बट एज अ होल जब मैंने देखा कि द नंबर ऑफ इमर्जिंग प्लेयर्स दे हैड आफ्टर द सप्लीमेंट्री पिक स्पेशली, they have 3 different type of emerging players. The first one they retained, obviously it was a trade from Karachi Kings, was Faisal Akram, a left-arm Chinaman bowler. Next, they picked Yasir Khan, who's a top-order bat, could potentially feature at 3, max 4. उससे नीचे तो नहीं खिलाएंगे, but he's a good batter, has a high strike rate. Played with I think Zalmi in the previous seasons. इसके अलावा later on, I'll cover the supplementary in this as well. They picked Aftab Ibrahim, who's a right arm fast bowler who also hits the deck hard. He's a good bowler, and I think they basically covered 3 different scenarios with these 3 different emerging picks. एक आपके पास left arm Chinaman bowler है, you have a hit the deck kind of a pacer, and you have a proper batter. So whichever team combination they go with regards to the different conditions in Karachi, Lahore, or Pindi, so I think, or Multan, so they'll play according to their emerging players according to that. I think they try to cover all their bases with regards to the emerging player, because usually if you get a player who's low on confidence in your emerging pick, तो वो पूरा season आपका suffer करता है. So they tried to shuffle it up this time around, and let's see how it goes. ओके जैद, इस कैटेगरी पर लास्ट क्वेश्चन पे आपकी इंसाइट्स लेना चाहूँगा। एनी प्लेयर फ्रॉम योर स्टैट्स, फ्रॉम योर लाइकिंग्स, फ्रॉम योर वॉच टाइम, जो ग्लेरिंग मिस हुआ, किसी प्लेयर ने नहीं उठाया, या pretty much all player you were hoping कि यार ये पिक हो, they were picked? आई थिंक मेरान मुमताज था, लेकिन वो लेटर सप्लीमेंट्री में पिक हो गया था। उसके अलावा इमर्जिंग में मुझे याद करने में आपने किसी और से सवाल पूछ लें। I think so. My pick would have been Sufyan Mukin. My pick would have been Sufyan Sufyan Mukin. Mukin ये था। हाँ, yeah, वो that लाइक is the पीएसएल fact. से आउट ऑफ ड्राफ्ट में रजिस्टर नहीं किया हुआ उसने। Is he out for PSL draft? Please confirm. Or like actual नहीं, PSL, of लिस्ट course, में आई PSL थिंक है, draft. लिस्ट में है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो खेलेगा, Of क्योंकि course. वो उसका भी Watch time रीहैब में, अभी हाँ, तक शुरू भी नहीं हुआ और वो होना था। Yup, my bad around that. Okay, तला नहीं, sorry, इमाद की तरफ आते हैं।
इमाद आपने लुंगी एनगेडी की तरफ टच टर्न कर दिया था, अभी जायद ने मेहरान का नाम लिया. These two were your last picks. Rate them out. Yeah, I mentioned earlier on that Nabeenul Haq would obviously not be available. There's a chance that he won't be available for the whole tournament. And Lungi Ngiri obviously serves as a great replacement. Probably he's probably better than him, some would argue. And Much and so better, yeah. this pick stands to be yeah. Yeah, So yeah. this pick stands to be a really good one, and we can probably see him playing in place in the wheel Nulhaga, even with him as well. And obviously that new ball issue that I've been having all around this live stream. There's always Zishan in the emerging category, and Lungi Ngidi obviously is a first change bowler for South Africa, but I think he can sort of come in and bowl the second over and just he and Naveen ul Haq and all these Amir Jamayos, they can all sort of go on and off. And then Mehran Mumtaz at supplementary again, excellent replacement for Noor Ahmed. We saw what he did in Junior League. We saw that afterwards in the national team. Excellent bowler. So I think Peshawar did really well in this draft. Yep, I think so. To wind up the supplementary category. पेशावर जलमी ने ओवरऑल मुझे काफी इम्प्रेस किया इस ड्राफ्ट में. आई वुड रेटिंग फाइनल रेटिंग्स करते हैं लाइक 1 to 6. आप अपनी रेटिंग्स पुट करना. प्लीज कीप कंपाइलिंग 1 to 6 विदाउट लाइक टेकिंग द बायस आउट. वो करते हैं. बट अरम आपकी फाइनल थॉट्स लेते हैं इस राउंड पे. तो योर पिक्स आफ्ताब इब्राहिम, प्लीज एक्सपैंड. For me personally, I don't know him personally. इस पे अगर आप एक्सपैंड कर सको that would be good. But दूसरी पिक आई थिंक सो आपकी थी क्रिस जॉर्डन की. So yeah, wrap your segment up. So we had Chris Jordan and Aftab Ibrahim. Aftab Ibrahim को मैंने पहले ही बताया. He's a right arm fast bowler, hits the deck hard, has bowled pretty well, can bat a bit as well. So he is considered to be a bowling all-rounder in that case. So I think Multan went with a safer pick with that regards कि वो तीनों अपने phases cover कर सकें, all bases covered. उसके अलावा Chris Jordan का ये है कि they maybe wanted someone who could deliver at the death, although he hasn't been at his very best in the last year. But I think they have faith that they'll take work out of him. Maybe he could be a cover for someone who becomes unavailable suddenly or for an unforeseen injury. So I think that they went to that route as well. Okay. Enough discussion on PSL. Quick fire ratings, I would say. Tala 1 to 6 rate करना है, taking the bias out. Please put your ratings of all PSL teams. इस पे वैसे ही बायस की एक्विजिशन तो आ जाएगी, बट आउटपुट इस्लामाबाद नंबर 1. लेकिन कल जैसे मैंने वो सॉरी प्रीव्यू के शो में बोला था कि इस्लामाबाद काफ़ी सीजन्स में ड्राफ्ट के बाद पेपर पे नंबर 1 ही होती है, बट एंड में नॉकआउट्स में दे डोंट ब्रिंग देयर ए गेम. किसी न किसी वजह से हार जाते हैं. जैसे 2021 में लेने टॉप द टेबल एंड देन क्रैश्ड आउट. 2022 में जीता हुआ मैच हार गए लाहौर से. 2023 में उससे भी ज़्यादा जीता हुआ मैच हार गए जल्मी से. तो they have to like really bring their A game. Number 2 पे I would put Quetta Gladiators actually. They picked some good players on top of good trades. So Rutherford, they needed a hitter. Rutherford ले लिया. उससे बेहतर options तो शायद मुझे नहीं नजर आए ड्राफ्ट पे. तो they needed a new ball bowler. आमिर को ले लिया. और बाकी डायमंड गोल्ड तो कवर था उनका क्योंकि ट्रेड्स अच्छे किए थे. और सिल्वर में उमैर यूसुफ, सऊद शकील, साजिद अली, सॉलिड पिक्स. उस्मान कादिर, I don't know, is tested and tried, below average bowler for me. और Akil Hussain, solid pick in supplementary, and Sohail Khan, leading wicket taker, so he deserves a go, I think. उसके बाद जल्मी number 3. और please be quick, we have to switch it over to the next segment as well. Zalmi, Multan, 3 and 4, and last I would put jointly Karachi and Lahore.
Okay. Aram, how would you disagree? Like not in terms of players, but in terms of ratings. Yeah, so I would agree to that extent के draft की हद तक Islamabad United, I would rate them at the top, followed by, in my opinion, Multan, because हर दफा draft के बाद people rate us out and they feel that we are not as quite contrary to Islamabad, that we are not that good at paper, but we tend to go through almost always. Then I'll put Karachi, Quetta, and I'll still put Peshawar at the end because I feel कि वो bowling में अभी भी lag करेंगे even after the picks that they've made. Okay. पेशावर की बात कर दिया तो इमाद वुड जो डिफेंड जो है केस प्लीज पुट जो है फाइनल 6 रेटिंग्स. Yeah, so Peshawar won't be the best side out of this draft, and I think it is pretty clear. Islamabad United have done some excellent work, and as always, they are going to finish on at the top of the table in terms of the draft. We don't know about the league itself. Moving on, Right. I think yeah, I would agree with Aram that Karachi did some good work in the draft, but they would still sort of lack some bowlers. So Multan would be a good shout for the number two spot, and I think Peshawar would be number three. It's safe to keep them at number three because decent work, not the best but decent. Okay. Zad, फाइनल रेटिंग पुट करें फिर ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट पे आते हैं. अमन भाई देखें, आपने रिक्वेस्ट की थी कि बायस नहीं रखना, तो मैं लाहौर को रेट ही नहीं करूँगा. That is cool, yeah. I loved it. नहीं देखें, लाहौर इतनी बुरी भी नहीं है, लाहौर इतनी अच्छी भी नहीं है, मैं रेट ही नहीं करूँगा ना, बायस ही नहीं आएगा, सिंपल सी बात है. इस्लामाबाद फर्स्ट, उसके अलावा बाद में है कोयटा या कोयटा कर लेंगे, क्योंकि कोयटा का मुझे ये है कि उनके आई थिंक मे बी देयर आर फास्ट बॉलर शॉट, क्योंकि वसीम है, हसनैन इंजरी से वापस आ रहा है, उसके अलावा सोहेल खान है, ठीक है, एक कोई फास्ट बॉलर है उसके अलावा. आमिर, तो हाँ, मोहम्मद आमिर. उसके अलावा क्या कहते हैं, कराची है थर्ड पे, और फिर पेशावर, और फिर वैसे पेशावर लास्ट, मुल्तान सुल्तान सेकंड लास्ट. Oh, okay, pretty diverse, but एक चीज पे सबका इत्तेफाक है, that is Islamabad United being the top of the draft, which I don't agree. Anyway, let me firmly put out the poll results जो PSL के round about थे. आपकी रेटिंग क्या है फिर if you don't agree? Okay, my pick still is with Multan Sultans as top. Islamabad and PZ joint second, third आप कह लो, followed by Lahore Qalandars, फिर Quetta and then Karachi. These are my 6 ratings. Anyway, इधर जरा debate करने का time है, of course we can plan a separate show, but yeah, let me announce the poll results. Lahore Qalandars ने 64% के साथ poll result जीत दिया. I am really happy for you guys. Hopefully we are jinxing you out right now. But panel पे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ये शो सिर्फ लाहौर में ही चलता है. might be. कराची के साथ जाती हो रही है, दीवार से लगाया जा रहा है दीवार के. परफेक्ट. ओके गाइस, कराची के साथ ज्यादती हो रही है, इस पे बात करते हैं. पाकिस्तान के साथ होगी या नहीं होगी, इस पे सबको एश्योरिटी तो है कितनी होगी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा टेस्ट मैच पर्थ पे शुरू होने जा रहा है. स्टार्टिंग 11 ऑफ कोर्स अनाउंस हो चुकी है. आई थिंक सो सिलेटी ने ट्वीट की थी, आई कैन एको हिज थॉट्स, शायद मैं रिपीट कर दूं उनके वर्ड्स के. in my watch time, one of the best batting output we have taken there, backed up by one of the worst bowling outputs we have taken there. So yeah guys, Tala, what are the most positive out of it, or glaring miss कौन सी की हमने? Hassan Ali is the obvious one, या do you have any other thoughts? नहीं यार, वैसे तो I would disagree.
with your assertion के या जिसने भी ट्वीट किया था कि worst bowling, I think 2019 में इससे भी बुरी थी. Shaheen was not as good as now. Abbas half fit था और फिर मूसा और नसीम डेब्यू कर रहे थे. तो I think इसमें थोड़ी improvement आई है और हसन अली को खेलना चाहिए था आमिर जमाल की जगह. थोड़ी पेस कम है जमाल से, बट इधर आपको कंट्रोल चाहिए ताकि पिछली दफ़ा आपको याद होगा कितना उन्होंने मार दिया था वार्नर और लाबुशेन ने. तो यू नीड सम कंट्रोल, यू नीड टू इंड्यूस सम एरर्स. हसन अली कैन गो अराउंड द विकेट बॉल टू वार्नर, जैसे ब्रॉड उसको आउट करता रहता है उस तरह वो एंगल यूज़ कर सकता है. इज एन एक्सपीरियंस बॉलर and I'm confident that he would not go for as many runs as maybe Jamal or Khurram Shehzad might go for. Okay. Aram, आपके तरफ आए तो I think so Shaheen has to take a lot of heavy lifting role. Premier fast bowler, but injury concern हमेशा उनके साथ रहेगा. Abrar Ahmed injured हो गया. I think he would have not played at least this Waka Perth test. शायद moving on वो अगले test matches में खेलते. Noman Ali के exclusion, are you okay with it? Because Salman Ali Agha को डाला गया. So जो have your say basically मैं spin outfit के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ. Are you okay considering the Waka Perth track? As far as Noman Ali's being considered to be in the 11, I actually commented on Tala's post the other day that please Noman ko na khila rahe hain, because considering all things, you cannot replace Abrar with Noman, especially considering how he bowled in that sort of a practice match at Canberra. But rather than that, yes, of course, Hassan Ali is a glaring miss. They went with, I think, which is a pretty defensive approach. I read Mazhar Arshid's tweet a while back. He also mentioned it that both phases we are going for a pretty defensive approach. We're trying to extend our batting by playing both Fahim and Amir Jamal, by constantly nullifying our bowling effect. Although there are four different types of bowlers, as Shan mentioned in the press conference today, that they are trying to play four different types of pacers who have different abilities and can operate in different pairs and phases. But I still feel overall as a whole that we needed Hassan and his experience, considering that you're debuting with Amir Jamal and Khurram Shahzad, both pretty young in the circuit as well. Although Khurram has played a bit of domestic cricket, रगड़ा खाया हुआ है उसने, but you never know what happens in Australia. Okay, if I can add a small question to everyone. We talk about experience, तो कुछ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस तो वसीम जूनियर की भी है. पहले होम सीजन में टेस्ट भी खेला था. तो why do you think he is not being considered as an option for the first test? Yeah, I think I was also pretty surprised. I literally asked this question myself कि क्यों consider नहीं कर रहा उसको, especially जब Haris backed out, so there was a lot of criticism on him, and they are not exactly the same types of bowlers, but you see that they have pace and they hit the deck hard. Wasim usually provides you with that reverse swing ability as well. He'll bowl those slanted seam deliveries. So I think कि जब इतना आपने हारिस को जोर दिया था कि he backed out at the very end, we had no other option, and you're literally not playing the for in that case the like for like replacement. So I think इधर self conflicting चीजें हैं, but that's how Pakistan usually works. Okay, moving towards you, इमाद, थोड़ा सा पॉजिटिव स्पिन डालते हैं प्लीज यार. फॉर माई सेल्फ मेरे पास एक डिलीवरी सोल्यूशन है कि ये मैच किसी तरह से ड्रा करें. प्लीज पेंट अस अ पिक्चर. मैं विन की बात नहीं कर रहा, जस्ट टू ड्रा दिस मैच आउट बिकॉज दिस इज द मोस्ट टफेस्ट ऑफ टेस्ट. इफ यू हैव एनी पिक्चर, अदरवाइज आई विल टेक द प्रिविलेज. Yeah, sure. So just to add a positive angle, I can see what they were trying to do with Amir Jamal, because they were extremely excited about the fact that they're going to take Haris Rauf and he's going to be like that. He's going to be
play that Mark Wood kind of role for Pakistan. He's going to bowl short, quick four over spells, and he's going to take 2 wickets in each. And that is what they had planned. So they probably see Amir Jamal as a very like for like replacement, someone who has pace, someone who hits the deck hard, and he provides you with the batting as well, because Pakistan is really concerned about their batting too in front of those three quick fast bowlers of Australia. And so हाँ that is the only positive angle I can see in Amir Jamal's selection. As far as Wasim Jr. goes, probably Aram's right. He could have been the like for high. So if they want to do that Mark Wood kind of role, and yeah, the batting is kind of settled. We all know that the middle order is going to be like this, and I'm kind of happy to see Salman Ali Agha in the 11. Not because he suits the conditions. If Abrar was there, he wouldn't have been playing. But he's someone who's worked extremely hard over these years, and he played so well in Sri Lanka. So he kind of deserves to have a spot in the 11, especially when Abrar is not there. And I was never going to think of playing Noman Ali. So Salman Ali Agha had to play. Sajid But Khan still, का I second. with all this positive spin, I still Okay. Sajid Khan is like हाँ, have your thoughts. Yeah, yeah. just to add a final thought, Ahmed. Yeah, with all this positive angle that I put, I still expect Australia to be 360 for three at 3 p.m. tomorrow when we are closing off our TVs. In 360 थोड़ा कम बता दिया वैसे. मैं भी यही सोच रहा था, थोड़ा तेज रन रेट होगा, कोई 400 तो होगा एक दिन में. They इंग्लैंड ने haven't 500 adopted मार दिया था baseball तो yet, but if Travis Head gets going, it's going to be 420 for three. 420 में से 200 वार्नर का होगा, ये मुझे लग रहा है. परफेक्ट फेयरवेल देंगे हम उसको. मैं ये सोच रहा हूँ कि 3 आउट किसने करे. बाबर आजम की ऑफ स्पिन. अगर बैटिंग पहले आ गई तो फिर 360 हो सकता है. अगर बॉलिंग पहले आई तो फिर 420. I think first session will be key अगर हम batting कर रहे हैं पहले. How do the Okay. especially Imam ul Haq, considering all that's been going on around him, opening the batting. So I think that will set the tone. The first session of the first test match will set the tone for the entire series. अगर फेंटा पड़ा तो फिर तो पूरी सीरीज पढ़ना है. और अगर आपने बैटिंग कर ली, अच्छी कर ली, तो आई थिंक that will be a great morale booster for everyone, and they'll continue with it throughout the season. I'm optimistic. Inshallah, अच्छा होगा. Okay. Nice. Yeah, nice to have thoughts from all of you. You pretty much covered up my Delulu solution. बस वही था कि पहले बैटिंग करें, round about score 400, which we can, I feel, even though Waka Path pitch, फिर हम उन्हें 500 करने दें, which they will do, but not at a much higher rate than 4. So it will roundabout take us to day number 4. बस वही decide करेगा if we can squeeze out a draw. We have to bat out around 90 overs. If we can, Babar Azam special would be needed. Pakistan में की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. Just need to rewind the clock back. But अगर मैं prediction put करूँ, Australia would be taking that test. Moving on, I have a chance we might squeeze a draw. Positive result, I would say. Loss is not, draw is a positive result. So, yeah, 2-0 result from me overall. Aram, please wind this segment. Quick fire prediction on series result. Yeah, I'd agree 2-0, but अगर बहुत ज़्यादा optimistic होऊंगा तो 2-1. Nothing else other than that. उससे आगे नहीं.
Yeah. Imad, our women's team did the first, I would say, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में जाके हराया. Can our Pakistan team do the same, like round about the same thing? Well, I think all the games will be result oriented if Pakistan plays with the Pakistan way. And so either it's 3-0 or it's 2-1. So we can hope that it's 2-1. And but a lot of people, experts, and like our hearts and our brains sort of say that it's going to be 3-0, and we don't want that. So let's just say 2-1. Yep. Or I do echo your thought. Hopefully we stick with the Pakistan way, the positive way that is. Or again, that is not to go attacking on. That is more about clarity of your roles. जो ball भी आप खेल रहे हो, you have clarity whether to defend, whether to attack. जिस phase में खेल रहे हो, if you have clarity in that, that is all we want. Tala and Zad, please round off your prediction one by one. आई थिंक 3-0 इजी प्रेडिक्शन, लेकिन सिडनी में आप जीत सकते हैं अगर उधर थोड़ी सब कॉन्टिनेंट टाइप पिच और आए, वो 2 स्पिनर खिला लें. तो अगर आप अब्रार और दूसरा स्पिनर अगर नुमान ही खिलाना पड़ेगा या अब्रार और अब्रार और आगा ही ले जाओ यार. लेकिन सिडनी में स्पिनिंग We are down to mere bones. रिवर्स स्विंग हो जाए, उस वक्त तक मुझे लगता है वसीम जूनियर लाइनअप में आ ही जाएगा. अगर 2 डाउन होंगे तो रिवर्स स्विंग भी यूज कर सकते हैं, स्पिनिंग कंडीशन भी यूज कर सकते हैं, और रन भी बन सकते हैं. तो दैट्स योर बेस्ट चांस टू गेट अ 2-1 रिजल्ट आउट ऑफ दिस. एक तो मैं पहले Zad, not to make it वसीम monotonous. Sorry. Zad, जरा monotonous नहीं करते आपकी तरफ. रिजल्ट एंड पे बता देना. बट अगर पाकिस्तान की तरफ से टॉप विकेट टेकर सीरीज में, पाकिस्तान की तरफ से टॉप रन स्कैटर, एंड देन रिजल्ट प्रेडिक्शन बताओ पाकिस्तान की तरफ से. उससे पहले मैं वो वसीम और आमिर जमाल और हसन अली वाली बात करना चाहता कि मेरा नहीं ख्याल वसीम जूनियर की जगह बनती है और आमिर जमाल की भी. तो वैसे भी बनती, क्योंकि वो लाइक उसमें कंट्रोल वैसे नहीं. और इवन जो हम बात कर रहे थे कि बैटिंग वाली, आई थिंक वो भी मुझे अगर हसन अली की बैटिंग में तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा. इंटरेस्ट कह रहा हूँ, मैं ट्रस्ट होगा हसन अली की बैटिंग पे आमिर जमाल की बैटिंग, क्योंकि आई थिंक हसन अली एक ज़रा बेहतर बैटिंग करने लग गया अब काफ़ी अर्से से. और आमिर जमाल इज़ मोर लाइक शाहीन टाइप बैटिंग है मेरे ख्याल में. आमिर जमाल की मुझे लाइक उसकी बैटिंग से कोई खास नहीं उम्मीद नहीं है. बाकी आई थिंक कि हसन अली खेलना चाहिए था यहाँ पे. और वसीम जूनियर टेस्ट में मुझे थोड़ा है कि वो लाइक खेला नहीं हुआ, ना डोमेस्टिक में रेड बॉल इतनी खेला हुआ है, ना वो लाइक टेस्ट में एक खेला हुआ है वो पिंडी पे बेस बॉल के खिलाफ आई थिंक. तो आई थिंक वो ज़रा उसके लिए भी मुश्किल होगा. बाकी यही था कि बाकी आने का टॉप 3 विकेट टेकर और टॉप 3 रन स्कोरर्स सिर्फ पाकिस्तान के. पाकिस्तान के टॉप 3 बैटर्स होंगे, क्योंकि ओवरऑल टॉप 3 ऑस्ट्रेलिया से हो जाएंगे विकेट टेकर्स तो वैसे भी. इसलिए पाकिस्तान से पूछे. पाकिस्तान के टॉप 3 बैटर्स होंगे मेरा ख्याल है बाबर. ओके, कूल इनफ. सेकंड पे आई थिंक अब्दुल्ला शफीक, और थर्ड पे मैं रखूंगा, और मुझे किसी बैट्समैन से उम्मीद ही नहीं लग रही. शान नहीं, बाबर, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक. और बॉलर्स होंगे शाहीन, हसन होता अगर वो ये वाला टेस्ट मैच खेल रहा होता सेकंड पे, लेकिन वो नहीं खेल रहा. तो आई डोंट थिंक 2 टेस्ट अगर वो खेलेगा भी तो कुछ करेगा इतना. शाहीन और कौन से हैं, खुरम शहजाद, शाहीन, खुरम शहजाद, और थर्ड पे आई गेस फहीम अशरफ. Okay, Rana ji. Okay, I think so. That is the perfect note to end today's show. Okay. अगर एक सवाल मैं पूछ लूँ सरों से कि do you think Rizwan should play ahead of Sarfraz? For me, it's a clear yes. Yes. मेरे ख्याल में तो साइम अयूब हेड ऑफ इमाम का भी थोड़ा बनता है. हाँ यार वैसे इस वाले टेस्ट में ऐसा नहीं, बट अगले वाले टेस्ट में श्योर इनफ
हाँ, ये मैं भी कहने लगा था कि पर्थ में इमाम को ही खेलने दो पहले। एम साइम का कैरियर इधर ही एंड करवा वैसे देना अगर तीनों। मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि हुरैरा होता तो हुरैरा को मैं इन दोनों की जगह ज़्यादा प्रेफर करता। हाँ, वैसे हाँ, हुरैरा को आई वुड सेलेक्ट डेफिनेटली करके जस्ट खिलाए बगैर ही ड्रॉप श्रीलंका कर में दिया। खिलाना चाहिए हाँ, था। मुझे लगा उसकी 2 सीज़न की परफॉर्मेंस है श्रीलंका जिसमें में भी जगह साइम बनती थी। आधी कैलेंडर ट्रॉफी भी नहीं खेला था। हम्म, अच्छा। हम्म, okay, Zad and Tala, please, please conclude your thoughts right here. We can have another session on Pakistan surely. There are lots of days ahead. Right now, आज की discussion को इधर end करते हैं. Viewers, if you are sticking with us right now, please, thank you so much. There has been a few viewers, one from Nepal, I can't comprehend his names. Then Hassan Tanveer and Dr. Ritvik, I know him from India. Thank you for joining us. Shout out to all viewers who got involved in the poll, which ended in victory for PSL Draft. So to rewind it all, we covered PSL Draft. All squads were rated, and in last segment we did a preview for first test and predictions for the series. I am so much thankful to Zad and Tala who have featured for GRC. इमाद का आप ट्विटर हैंडल देख सकते हैं, अरम अहमद के नाम के आगे just 501 ऐड कर दे तो you can find him on Twitter as well. Thank you so much personally to Aram, to Imad, to Tara, to Zad for making my job easier amidst my patchy internet. Humbled and privileged to have hosted you. So yeah, viewers, best of luck to Pakistan cricket team. Hopefully you guys make us proud. I would sign off by note of Imad. Just play the Pakistan way. Results are, results would remain the same. We just want to see that pattern going. On that note, myself, Ahmed, along with these brilliant panelists, would like to sign off. Viewers, Jitra Salamat and Allah Hafiz.